ओम गुरुभ्यो नमः। आदरणीय गुरुवर श्री शुक्ला जी को मेरा शत शत प्रणाम, who have been a guiding force to me at a time when I needed that most. Shri Rangacharya ji, who has always been forcing me to write something on astrology, and that time to time. Shri Vishwanath Hola ji for the technical support and his team. And good morning to all faculty members, my colleagues present in the webinar. Today I will be discussing about some matters of progeny. हम जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो नॉर्मली हर दूसरी तीसरी कुंडली हमारे पास हमारे संतान से कनेक्टेड आती है. एंड इट इज अ सेइंग दैट आई हैव सीन दिस सेइंग इन सम टेम्पल्स इन माय रिलीजियस ट्रिप. आई वुड लाइक टू शेयर इट. पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो धन्य जीवन. Now, when we say first sukh is of kaya, it means the healthy body. That is the lagna, lagnesh, even the moon lagna. 6, 8, 12 houses, these are important. Duja sukh ghar mein ho maya, second house, 11th house are important for wealth, because without wealth we cannot do anything. That is the second level of happiness. Then for this second and 11th house are important. Third level of happiness is Kulvanti Nari, that is your wife, or in the case of female, it is husband. Wife should have all the qualities to make you happy and should be sober and caring. जितना अगर पारिवारिक जीवन उसका वैवाहिक सुख है तो वो काफी व्यक्ति अपने आप को हैप्पी सुखी महसूस करता है. Then the fourth level of happiness is of putra agyakari. Now this is important, for which this article is. If you are having a child and if that is obedient to you, serving you in all the matters, that this is fourth level of happiness. Then even a millionaire जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो भी अपने आप को डिफीटेड फील करता है अगर उसकी संतान उसके कहने पे नहीं चलती है या उसे परेशान करती है. And in all the astrological text, we have one chapter on the Santan Sukh. The fifth level of happiness is by residence. This is the Swadesh Vasa. For Putra, we see the 5th house and 9th house. From 5th, this is important. For residence, it is the 4th house is important. And even Swadesh Vasa. Swadesh means that you are residing at your place with your nears and dears, with your kutumb. So for this 4th house, 2nd house, 3rd house, all are important. Now, the next level of happiness is Raj Ho Pasa. It means the government authorities are with you. That is, you are well connected with them and you can get all your work done through your sources. For this, 10th house is very, very important. And finally, the Santoshi Jivan, satisfactory, peaceful life. Even if you have all the happiness, if your mindset is not satisfactory in nature, you will not be happy. So for that purpose, moon and sun should be unafflicted, should be aspected by the benefics. Now, for getting a progeny and getting them seen and educated, this is the dream of every person. As per the Hindu mythology, Lord Brahma, the creator of the world, he was provided with the knowledge of Veda, which was divided into four Vedas in the Dwapar Yuga by Vyasji. Now, Vedas had to be originated from the mouth of Lord Brahma. Now, these Vedas made Lord Brahma aware of 3 major rin that a person have in his life that he has to repay. The first rin is of Dev rin. We are born with the prarabdha karma, destiny, that comprises of the karma fal which we shall get in this life due to the good and bad deeds of our past life.
पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप जो हमें कर्म फल इस जीवन में भोगने पड़ते हैं, अगर हम अपने 3 ऋण ये रीपे कर देते हैं तो वी आर एक्विटेड फ्रॉम द एगनी एंड सफरिंग फ्रॉम द बैड कर्म फल। पूरे बुरे कर्मों से हमें निजात मिल जाती है अगर हम 3 अपने ऋण पे कर देते हैं हमारी आगे के जीवन में। ये डेट कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज द देव ऋण। हमारे ऊपर एक सभी देवों का ऋण रहता है। गॉड विल worship the god in various forms. By respecting and worshipping these god, by performing the rituals, this debt is repaid. Our life is sustained by the Panch Mahabhut, Agni, Prithvi, Vayu, Jal, Akash. Now, we worship all these in the different form. अग्नि को हम अग्निदेव के बारे में पूछते हैं, सूर्य देव की तरह पूछते हैं, पृथ्वी, वरुण देवता, जल देवता, अन्नपूर्णा, सभी पवन देवता, सभी को हम अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं हमारे हिंदू माइथोलॉजी में। एंड बाय परफॉर्मिंग द रिचुअल्स दिस डेट इज रिपीट। सपोज हम अगर सूर्य को अर्घ देते हैं तो मॉर्निंग की हमें फ्रेश एयर भी मिलती है, विटामिन डी मिलता है, वी बिकम हेल्दी, वी गेट सम रिजल्ट आउट ऑफ दैट। सो आवर रिचुअल्स आर लाइक दैट। इफ वी अडॉप्ट दैट, वी लिव ए हेल्दी लाइफ। नाउ सेकंड ऋण ऑफ ऋषि ऋण। वी आर इंडेप्टेड टुवर्ड्स आवर एंसेस्टर्स एंड ऋषियर्स, जिन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, ये सब हमें नॉलेज दिया ग्रंथों में, हमारा ऊपर उनका ऋण रहता है। ये ऋण बाय स्टडिंग एंड देन गेटिंग द नॉलेज एंड डिसिमिनेटिंग दैट नॉलेज टू अवर नेक्स्ट जनरेशन, हमें ऋषि ऋण से ऋण हो जाते हैं। तो अगर हम इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करते हैं तो इन ए वे वी आर गेटिंग फ्री अवर सेल्फ फ्रॉम द ऋषि ऋण। हमारा गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम, ये हमारे लर्निंग के लिए और हमें दूसरों को नॉलेज देने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारे जो वर्ण व्यवस्था जो हमें की गई है उसी के लिए है। हमारे ऋषि मुनियों ने, चाहे वो व्यास जी हों, जिन्होंने रामायण, गीता, महाभारत सभी को लिखा है, श्रीमद् भागवत पुराण, पराशर ऋषि, नारद ऋषि, सभी की अपनी अपनी संहिताएं हैं जिन्होंने हमें काफ़ी नॉलेज दी है। वी हैव टू स्टडी देम, इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टडी देम एंड देन टीच आवर चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट जनरेशन अबाउट this knowledge that we have got through our ancestors or rishis. This is the rishi ऋण. Now the next is the पितृ ऋण. Now this is all about जिसके बारे में हमारा ये लेक्चर है, पितृ ऋण। हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू एक ड्यूटी रहती है। वी हैव सम ड्यूटीज अवर पेरेंट्स, फोरफादर्स, एंसेस्टर्स, जिन्होंने हमें एक लीनिएज दी है, प्रेशियस ट्रेजर दिया है, कल्चर का, ट्रेडिशन का, संस्कारों का। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम संतान की उत्पत्ति करके गृहस्थ आश्रम के थ्रू अपनी नेक्स्ट जनरेशन में अपने सारे संस्कार, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, इसको आगे बढ़ाएं। और इसी के लिए हमारा, जब हम कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने पुत्र का मुख देख लेता है वो पितृ ऋण से ऋण हो जाता है। तो इट इज अवर धर्म बेसिकली टू गिव बर्थ टू अवर चिल्ड्रन एंड सो दैट वी कैन रीपे अवर पितृ ऋण। नाउ in Sanskrit, a son is called Putra. Pu या Pum is the name of a hell, और Tra is the to deliver. जो पुम नामक नरक से पार करता है वो उसे पुत्र कहा जाता है। श्लोक 138 चैप्टर 9 में मनुस्मृति कहती है, पूत नामनो नरकाद यस्मात् त्राय ते पितरं सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयं एवं स्वयं भुवा। क्योंकि पुत्र अपने पिता को पुम नामक नरक से पार कराता है, इसीलिए अपने द्वारा, इसीलिए उसे पुत्र कहा जाता है। अब हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट संतान उत्पत्ति जरूर करनी चाहिए। आजकल के कंटेक्स्ट में, पुराने समय में हम जब पुत्र कहते थे तो क्योंकि लड़कियों की जल्दी मैरिज हो जाती थी अर्ली, और पुत्र ही घर में रह के उनकी सेवा करता था, तो इसलिए पुत्र वर्ड यूज किया गया। बट इन टूडेज कंटेक्स्ट इट डज नॉट होल्ड गुड, क्योंकि आजकल 1 या 2 संतान ही होती है, तो पुत्र हो या पुत्री, इट इक्वली होल्ड गुड फॉर बोथ ऑफ दैट। तो वी शुड नॉट से कि पुत्र मीन्स सन ओनली, इट इज डॉटर आल्सो, बिकॉज जब हम आगे अपने पितरों का ऋण करते हैं तो पुत्र और पुत्री दोनों से हमारे आगे की चलती है। नाउ ये भी कहा जाता है कि अगर किसी के संतान नहीं है, इफ इट ही वर्शिप द लॉर्ड विष्णु, दैट विष्णु हिमसेल्फ बिकम द सन, और उनको पुम नामक नरक से पार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर विष्णु भक्त लोगों को इस गृहस्थ आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है संतान उत्पत्ति के लिए, विष्णु भगवान खुद उनको इस सबसे पार कराते हैं।
Now, according to the Manusmriti, 40 to 48 shloka, sun are said to be of 12 kinds. ये अलग अलग क्लासिकल में इनके अलग अलग नोमेनक्लेचर कुड बी देयर. नाउ फर्स्ट इज द औरस पुत्र. औरस पुत्र आपकी शादी के बाद जो अपनी पत्नी से जो संतान उत्पत्ति होती है वो औरस पुत्र कहलाती है. दैट इज नॉर्मली व्हाट सी इन द सोसाइटी. दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड इज क्षेत्रज पुत्र. अगर आपका किसी कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या बीमार है, सिकली है, तो किसी ऋषि को ये जिम्मेवारी दी जाती है या किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो पत्नी से संतान उत्पत्ति करता है. इसको नियोग बोला जाता है. महाभारत काल में धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर इत्यादि की उत्पत्ति कहा जाता है कि ये नियोग से ही हुई थी. दत्तक पुत्र, अडॉप्टेड सन आजकल बड़ा कॉमन है. जिनके संतान नहीं थी वो कोई अपना दत्तक पुत्र बना लेते हैं. ये एक पेरेंट्स जो है अपने किसी नीडी पेरेंट्स को, दूसरे नीडी पेरेंट्स को अपना बच्चा दे देता है, वो उनका दत्तक पुत्र बन जाता है. कृत्रिम पुत्र, आर्टिफिशियल सन, ये कि अपने ही कुटुंब के या अपने ही कास्ट के किसी बच्चे को उसकी क्वालिटी की वजह से कोई दूसरा परिवार उसे अपना पुत्र मान लेता है. ये कृत्रिम पुत्र बोला जाता है. देन गुणोत्पन्न पुत्र. ना गुणोत्पन्न पुत्र इज बॉर्न आउट ऑफ द सीक्रेट अफेयर्स. यहाँ पे किसी अवैध संबंध के कारण कोई पुत्र की उत्पत्ति होती है. नॉर्मली ऐसे केसेस में फादर का नाम सन को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है. ये गुणोत्पन्न पुत्र है. अपविद्ध पुत्र, हम किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को अगर उसके पेरेंट्स उसे छोड़ देते हैं, डिसोन कर देते हैं और वो दूसरा परिवार उसको अडॉप्ट कर ले, अपने पास रख लेता है, वो अपविद्ध पुत्र कहलाता है. कानीन पुत्र, ये अगर किसी अनमैरिड लड़की को कोई पुत्र उत्पत्ति होती है तो आफ्टर दैट मैरिज के बाद वो पुत्र कानीन पुत्र कहलाता है. सहोद पुत्र, गर्ल इज प्रेग्नेंट बिफोर द मैरिज एंड सन इज बोर्न टू द गर्ल आफ्टर द मैरिज. दिस इज that son is considered the son of the husband later on. This is called the sahod putra. Then kreet putra, इसमें पैसे देकर एक बच्चे को या किसी व्यक्ति को पुत्र की तरह खरीद लिया जाता है. ये आजकल हम देखते हैं कई जगह फैमिली बच्चे के लिए कोई डोनेशन वगैरह दे के कोई बच्चा ले लिया जाता है. पुनर्भव पुत्र, सन फ्रॉम द डाइवर्स और डेजर्टेड वुमन who have married again. अब कोई किसी व्यक्ति लेडी का डिवोर्स हो गया है, उसके कोई पुत्र है, वो दोबारा शादी कर लेती है, तो पहला जो पुत्र है वो पुनर्भव पुत्र कहलाता है. स्वयं दत्त पुत्र, अगर किसी व्यक्ति को उसके पेरेंट्स ने डिसोन कर दिया और वो पुत्र खुद ही अपने आप को ऑफर करता है अडॉप्शन के लिए, उसे स्वयं दत्त पुत्र कहते हैं. एंड पार्श्व पुत्र या शूद्र पुत्र, ये किसी ब्राह्मण और शूद्र विमन, ब्राह्मण व्यक्ति है मेल है और शूद्र फीमेल है, उनसे कोई पुत्र उत्पन्न होता है. इसको पार्श्व पुत्र कहते हैं. Such son are not normally accepted in the society and these are considered as living dead. Out of these 12, first 6 are entitled to the ancestral property as per Manu, and the rest 7 to 12 kind of son are not entitled to the share of ancestral property. इनको हमें पारिवारिक संपत्ति पहले 6 कैटेगरी के पुत्र को ही मिलती है, बाकियों को नहीं मिलती है. Now beside that, 13 kind of son is also there. That is पुत्रिका धर्म पुत्र, जिसमें फादर जो है अपनी लड़की के पुत्र को यानी कि जिसका वो नाना है उसको अडॉप्ट कर लेता है एज हिज सन. तो ये पुत्रिका धर्म पुत्र माना जाता है. कलयुग में बिकॉज ऑफ द लो, काफी लालच लोगों के उसमें होता है, क्वालिटी ऑफ माइंड सेट इज वेरी लो, तो अपनी वाइफ से उत्पन्न पुत्र को ही जनरली पुत्र माना गया है. इसके अलावा दत्तक पुत्र को, बाकी को आजकल पुत्र की संज्ञा नहीं देते हैं, पुत्र नहीं कहा जाता है, बट स्टिल सम आर पॉपुलर. अब कमिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट, द क्लासिकल जातक पारिजात, इन्होंने व्योनि जन्म अध्याय, इसमें काफी कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं कि किस टाइप का पुत्र कब उत्पन्न होता है. देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट, बट काफी समय पेरेंट्स अपने बच्चे को इफ ही इज नॉट द औरस पुत्र, उसको नहीं बताया जाता है कि दैट इज नॉट द औरस पुत्र. जनरली सारी डिटेल देने के बाद, बिकॉज द सन मे हैव द इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर,
these things are kept secret from the sun and from the society, sometimes from the society as such. Now, this is about the kind of sun we can have. Now, coming to the probability of children in the horoscope. It is to be seen from the, we all know from the fifth house is important, ninth house is important, and then the Lagna is important. Dharma Trikona is there. Then the Kam Trikona, 3, 7, 11. That is also important. And finally, the eighth house, that depends, that is the sexual organs. So seventh and eighth house are especially important for the pregnancy and delivery in the childbirth in case of female. So these becomes the important houses for the probability of, while checking the probability of children in the horoscope. Now, planets which are important in the horoscope for females, for normal menstruation and normal ovulation. Now, it is the moon. It is correct for the liquids in the body, mental condition for menses also, and important for the production of hormones in the body. Mars, the कारक of blood and blood flow. Jupiter, संतान कारक होता है, and Gulik, basically for share or loss. So in female chart, if Moon, Mars, and Jupiter are auspicious, connected to each other in D1 and D9 in Kendra or Trikona, then we will say that the lady may have the children. However, if Gulik is connected, then there is obstruction to it. Rashi and Namash में dispositor of Gulik is not well placed, then obstruction may give some complications. तो गुलिक की युति अगर मून से, मार्स से या जुपिटर से इन फीमेल चार्ट रहती है तो चाइल्ड में बियरिंग में कई बार कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम आ जाती है. इन द मेल्स प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट आर द सन, बिकॉज सन को नाड़ी में पुत्र कहा गया. ये बोला गया है कि पुत्र ही पिता के रूप में जन्म लेता है. तो सन को पिता और पुत्र दोनों का कारक माना गया है. It is for the general potency, general health in males. Venus for sperm production, its count, its quality, and in male charts, again, Jupiter and Gulik are important, just like the females. Now, in Faldipika, Putra Bhav Faladhyay, Mantreshwar has given the condition we all know. I will not go into detail of it. Fifth Bhav from the Lagna and fifth lord, fifth Bhav from the moon and its lord, Jupiter. And when you say in Gemini, the Putra Karak planet, which is the fifth number in degrees longitude. Then, if all these have benefic aspects, fifth lord अगर fifth house को देखता है, शुभ जो है fourth lord या ninth lord fifth house को देखते हैं, it makes the Raj Yoga again. It is very good. And sixth lord, eighth lord, and 12th lord, जो हमारे भाव हैं, if they are not aspecting the fifth house or fifth lord, that is good for santan sukh. And PSC relationship, the Lagna lord and Putra lord, fifth lord, that is important. Now, generally the question is asked कि हमारा जो, especially at the time of first pregnancy, कि हमारे लड़का होगा या लड़की होगी. This is a very general question. We have classically given so many combinations, but what I use personally is the general first boy will be a son if Lagna has the odd Navansha. Lagna Navanshyesh is in odd Navansha sign again. मतलब D9 का जो लग्न लॉर्ड है वो भी अगर और साइन में चला जाता है तो लग्न का नक्षत्र लॉर्ड ये भी ऑड राशि में चला जाता है. गुलिक राशि लॉर्ड ऑड में है, ऑड नवांशा में है, ऑड भाव में है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 में अगर है गुलिक का राशि लॉर्ड, that is also good for male child, that is the sun. Fifth lord in odd sign and in odd namansha. Fifth lord Vargottam in odd sign. Jupiter in trine to the gulik, but my personally feel when it is trine, it should not be in the trine. In the above combination, if instead of odd it is even, some rashi agar aa jati hai, so that will give first child as the female instead of the male. Jupiter कई बार अगर अपनी राशि का पंचम में हो तो कारको भाव नाशाय को देखते हुए sometimes delay or deny the birth of a son, but girls are child are born timely. तो पंचम का बृहस्पति भाव का नाश करता है तो वो संतान में मेल चाइल्ड का खास नाश करता है क्योंकि इट इज अ मेल प्लैनेट. और
कई बार मेल सन होने में दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम रहता है. नाउ दिस इज horoscope in which now Lagna has odd Namansha, odd sign and odd Namansha. In Namansha also it is odd. It is Vargottam basically. Now Lagna Lord and D9 Lord Mercury. In Namansha it is an odd sign. Lagna ka Nakshatra Lord, it is Punarvasu, that is Jupiter. It is also in D1, it is an odd sign. Gulik in Namansha, it is a odd sign. Sing Namansha it is. Now fifth lord, Venus, is debilitated in D1, but in D9, it is an odd sign along with the sun, which is exalted in D9, but in D1, it is in the fifth house, though debilitated. Now, even fifth from fifth, ninth lord, Saturn, in Namansha, it is in odd Namansha. In odd Namansha, in the ninth house itself. So, this promises the first child as the son. In fact, this person had first 5 children as the boy. One died at the younger age, and after that, the 3 younger daughters were born, and after that, one son was born. So, having more odd Namansha, odd signs, male planets connection give the son, and even sign, even Namansha, female planet connection give the daughters. Now, this is another case in which fifth house has Jupiter as the fifth lord in the fifth. Now, Jupiter as a fifth lord in fifth house, Karka Bhavnasha, it does not go. It gives daughter in time, but son are not born normally in time or born after much complications. Now, female planets, moon is aspecting the fifth house. One daughter is born in time, but after that, this gentleman tried a number of times for the son, but he couldn't get. Even for next 8 to 10 years, he had many abortions, but couldn't get a son. Now, for Putra Bhavfal, more the benefic relationship with the fifth house, fifth lord, Jupiter, it gives the Putra Siddhi, we call it Putra Siddhi. But if malefic relationship is there, that gives problem in the progeny, we call it Putra Badha. Pancham house में अल्पसुत राशि, barren signs, it gives lesser number of children, which is Taurus, Leo, Virgo, and Scorpio are said to be barren signs. तो पंचम भाव में पंचम लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड अगर बैरन साइन में हो, अल्पसुत राशियों में हो, तो संतान की संख्या कम होती है. बट आजकल ये ज्यादा होल्ड ठीक नहीं करता, क्योंकि बिकॉज नॉर्मली पर्सन आर हैविंग 1 or 2 child only. In all the classicals, there are various yoga concerning the no progeny, abortions, obstruction in progeny, santan badha, delay in progeny, progeny from the second marriage, not from the first marriage, and the kind of son a person may have, as per the Dharmashastra, as per Manu. Now, Bharat Prashar, chapter 86 to 97, it explains कि कब जो है संतान उत्पत्ति परिवार के लिए या संतान के खुद के लिए, माता के परिवार की तरफ से, पितृ के परिवार की तरफ से, दोनों के लिए ही कष्टकारी होती है. अगर बच्चे का जन्म अमावस्या में होता है या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होता है, दैट इज डे बिफोर द अमावस्या, इट्स नॉट गुड. अगर किसी बच्चे का जन्म भद्राकरण तिथि शय में, व्यातिपात, परिग, वज्र योग इत्यादि अशुभ योग में जन्म होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. सूर्य संक्रांति का जन्म, not supposed to be good for the parents also, for the son also, for the putra itself, child itself. सोलर या लूनर एक्लिप्स में अगर जन्म होता है, नॉट गुड. नक्षत्र गंडांत में, दैट इज मरकरी और केतु के नक्षत्र के बीच की संधि में अगर बच्चे का जन्म है, नॉट गुड. लग्न गंडांत में, जिसमें वाटरी और अग्नि तत्व की राशियां, जैसे कर्क सिंह हो गई, वृश्चिक धनु हो गई,
और मीन मेष हो गई, इसमें अगर जन्म होता है, इनकी संधि में जन्म होता है, नॉट गुड। एंड तिथि गंडांत, पूर्णा और नंदा के बीच की जो संधि होती है, दैट इज पंचम, 5वीं 6ठी तिथि का मध्य है, 10वीं 11वीं का, और पूर्णमासी अमावस्या और प्रथमा का जो संधि काल में जो जन्म है उस समय, दैट इज नॉट सपोज टू बी गुड। 3 लड़कियों के बाद पुत्र की उत्पत्ति और 3 लड़कों के बाद पुत्री की उत्पत्ति, वो फैमिली के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, चाहे मदर के लिए या फादर की फैमिली, दोनों के लिए ही कष्टकारी होती है। कोई किसी बच्चे का जन्म 2 से लेके 4 महीने कम या ज्यादा में हो जाए, मतलब 9 महीने का नॉर्मली चंद्र के 10 महीने मानते हैं और सोलर हम 9 महीने मानते हैं, 9 महीने कुछ दिन, तो अगर इससे 3-4 महीने तक आगे अगर डिले हो जाती है डिलीवरी, या उससे पहले हो जाती है, आजकल 6ठे 7वें महीने के बच्चे भी देखे गए हैं, दिस इज नॉट सपोज टू गुड या गुड। एंड इट इज आल्सो सेड, किसी पशु से मानव का जन्म या मानव से पशु का जन्म, आजकल ऐसा ज्यादा देखने में सुनने में नहीं आता, बट बीच बीच में कई बार न्यूज में इस टाइप की न्यूज मिल जाती है। किसी बच्चे का जन्म मोर देन नॉर्मल पार्ट्स, हाथ ज्यादा हैं, किसी के पैर ज्यादा हैं, या किसी के मस्तक 2 हैं, या ये सारे के सारे अशुभ माने जाते हैं फॉर द विलेज, फॉर द कंट्री एज सच। तो ये एक अशुभ सूचक बच्चे संतान होती है सारी। इन सभी के लिए पराशर ऋषि ने शांति की व्यवस्था की है कि हमें प्रॉपर शांति इन सबकी करानी चाहिए एज पर द नॉर्मल विद ए नॉलेजेबल प्रिस्ट, तभी हम इसको आगे बच्चे का भविष्य हम ठीक कर सकते हैं। नाउ टू चेक द कैपेबिलिटी ऑफ ए मैन और वुमेन, कि वो उसमें संतान उत्पत्ति की या संतान को उत्पन्न करने की कितनी क्षमता है भी कि नहीं, इसके लिए क्लासिकल्स में बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट दोनों लिखे गए हैं। बीज स्फुट पुरुषों के लिए और क्षेत्र स्फुट स्त्रियों के लिए। बीज स्फुट को कैलकुलेट करने के लिए सूर्य, शुक्र और बृहस्पति, इन तीनों के लॉन्गिट्यूड को जोड़ा जाता है। अगर तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारा स्फुट आया उसका हम राशि और नवांश दोनों कैलकुलेट करते हैं। इफ दैट इज इन ऑड साइन, ऑड नवांशा, इट मीन्स दैट मैन इज, इट इज फॉर मेल, if it means that person is having 100% capability or potency to give birth to the child. It is irrespective what the 5th house is saying or 5th lord is saying, but बीज फुट अगर अच्छा आता है, that means potency to give birth to the child is there if it is an odd sign and odd namansha. But अगर ये even sign और odd namansha में या odd sign even namansha में आता है, it means that capability is, potency is 50% only. It means that person may need some medical treatment, remedial measure to get the issue sorted out, and the child is born with some difficulty or delay. If the Bij Sput is in even sign, even Navansha, then the man does not have the potency or capability to give birth to the child. We say his sons are defective. It is either the count is very less, or the quality of sperm is not good. Similarly, for females, we check Kshetra Sput. This is calculated by adding the moon longitude, the Mars longitude, and the Jupiter longitude. इनकी हम राशि नमाश, फिर then we calculate final sput in the sign and नमाश, कौन सी राशि कौन सी नमाश में ये आता है। अगर ये even sign, even नमाश में आता है, that is supposed to be very very good, that the female is having the capacity to give birth to a child. तो अगर जो हमारा क्षेत्र स्फुट है वो सम राशि सम नमाश का है, तो विल से कि उसको फीमेल की कुंडली में पूरी पोटेंसी है फिजिकली। अगर ये ऑड साइन ऑड नमाश में आता है, इट मींस कैपेबिलिटी टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इज नॉट देयर, इट मींस द सॉइल इज इनफर्टाइल। तो लेडी में कैपेबिलिटी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, अनफर्टाइल है, इट मीन शी इज अनेबल टू बियर द चिल्ड्रन। सिमिलरली इफ क्षेत्र स्फुट इज कम्स आउट टू बी सम राशि विषम नमाश या विषम राशि सम नमाश, odd sign even namasha and even sign odd namasha, it means the woman is having the 50% chances of giving the birth to the child. Again, children are born with the medical treatment, some difficulty is required, is there, so medical treatments, remedial measures are there. Now besides that, if there is some past life sharp, some curse is there, we say it is putra badha,
This is calculated by calculating the Santan Tithi or the Putra Tithi. By calculating the Putra Tithi or Santan Tithi, we multiply the longitude of moon by 5 and longitude of sun by 5 separately, and then we calculate Tithi and Karan for the total. तो संतान तिथि निकालने के लिए हम चंद्रमा के भोगांश को 5 से गुणा करते हैं, उसमें से सूर्य के भोगांश को 5 से गुणा करके माइनस करते हैं, और फिर तिथि निकालने के 12 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो हमारी पुत्र तिथि संतान तिथि आ जाएगी, और इसी प्रकार अगर 6 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो हमारा संतान करण आ जाता है, पुत्र करण आ जाता है. तो इन द होरोस्कोप वेयर द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड बर्थ इज देयर, we should calculate the बीज and क्षेत्रस्फुट and the संतान तिथि. अगर संतान तिथि शुक्ल पक्ष की आती है, that indicates the child will be born without much trouble, without any much difficulty. आराम से हो जाता है अगर शुक्ल पक्ष का आता है तो तिथि आती है तो. But if it is of कृष्ण पक्ष, that means the child will be born with difficulty and chances of birth are less. तो कृष्ण पक्ष की तिथि आना एक अच्छा नहीं माना जाता, स्पेशली अगर तिथि चाहे वो शुक्ल की हो या कृष्ण पक्षी हो, अगर वो छिद्र तिथि है. छिद्र तिथि मीन्स अमावस्या, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नौमी, द्वादशी एंड चतुर्दशी, तो ये संतान बाधा मानी जाती है वहां पे, एंड ऑब्स्ट्रक्शन होता है हमें किसी भी प्रोजनी में. तो उसके लिए हमें शांति करनी पड़ती है देवी देवताओं की पूजा करके. एंड करण अगर हमारा स्थिर करण आ जाता है, स्थिर करण मीन्स शकुनी, चतुष्पद, नाग, किष्टुघन, या फिर विष्टि या भद्रा करण आता है, इट आल्सो मीन्स कि कुछ शांति की वहां पर जरूरत है. अगर तिथि कृष्ण पक्ष के साथ साथ कृष्ण पक्ष में प्रथमा से पंचमी के बीच की आती है, तो क्लासिकल सेज कि नाग देवता की पूजा हमें करनी चाहिए, या गणपति की पूजा करनी चाहिए, पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए, या ऐसे देव की जिसके साथ सर्प हो उनकी पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव हो गए. जैन में आदिनाथ जी जो हैं ये सर्पदा देवता माने जाते हैं, तो उनकी पूजा जैन लोग कर सकते हैं. और साथ में बिसाइड्स प्रेग्नेंट वीमेन या प्रेग्नेंट लेडीज की हमें हेल्प करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, बच्चों की हेल्प करनी चाहिए. अगर तिथि कृष्ण पक्ष में षष्ठी से लेकर दशमी तक है तो हमें कार्तिक देव स्कंद देवता की पूजा करनी है. साउथ इंडिया में मलय स्वामी जो कार्तिकेय जी के ही दूसरा नाम है, लॉर्ड राम, सूर्य, शिव, दुर्गा, दीज शुड बी वर्शिप्ड. राम कथा में पार्टिसिपेट करें, करवाएं राम कथा, और हाथियों की केयर करें. हम नॉर्थ में तो नहीं, तो साउथ में हाथी काफी रहते हैं. रेप्टाइल्स, इनको फीड करें. अगर तिथि कृष्ण पक्ष की एकादशी लेके अमावस्या तक है तो अगेन लॉर्ड विष्णु इज टू बी वर्शिप्ड. नाग पूजा, गायत्री जप, पुरुष सूक्त, प्रदोष व्रत, ये सब हमें करना चाहिए. नाउ दिस इज ए फीमेल चार्ट जिसको इन स्पाइट ऑफ वेरियस एफर्ट्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट शी कुड नॉट बी अ चाइल्ड. नॉर्मली सीइंग यहाँ पर इस चार्ट में पंचमेश पंचम को देख रहा है. Fifth lord aspecting the fifth house, good. Karak Jupiter is also aspecting the fifth house, that is also good. Fifth lord is in the Lagna, though debilitated, but it is there. But again, it is with the eighth lord and seventh lord, so some affliction to the fifth lord is there. Oh, sorry, fifth lord is aspecting it. Even in this case, the eighth lord is in the Lagna. Fifth house has no other aspects. In D9, fifth lord is in Lagna in D1. Even Lagna lord in D9 is in Lagna. So it means in D9, when we see the D9, fifth lord is aspecting the fifth house. Again, the fourth lord and the ninth lord is in the fifth. Sun is there, which is also supposed to be पुत्र कारक. हालांकि वो कहा जाता है कि क्लासिक में ये पहले पुत्र का नाश करता है, but it is there. In spite of all these, she could not bear a child after many efforts, many years.
When I calculated the Kshetra sput for the lady, it was Libra, first Navansha. That is the odd sign. First Navansha is Libra itself. So odd sign and odd Navansha. Santan Tithi was a Krishna Paksha Chidra Tithi, Chaturdashi, highly inauspicious for Santan. Santan Karan was Shakuni. So all the three parameters shows that negative to the childbirth. She is not having the capability to bear a child. Some past life sharp are running, which are not giving children in this life, and later on she herself accepted the fact that happiness is uh, not available in this life, so she accommodated accordingly. Similarly, in the next chart, now Lagna Lord Moon is debilitated in fifth house in watery sign. Watery sign in fifth house are supposed to be good. Agni Tattva sign in the fifth house are not supposed to be good. Now, it is debilitated, so it may give some mental tensions with respect to the pregnancy. Both fifth lord and the Karak Jupiter is in the 12th house. But together, fifth lord is with the Karaka. In D9, fifth lord, Mars, aspecting the D9 Lagna lord, and D9 Lagna lord is in the 11th house, aspecting the fifth lord. Fifth house, it is good, and its fifth lord also. That is supposed to be good from that angle. Now, debilitated Saturn is in the fifth house along with the Rahu. Affliction is there in D9. I'm not taking the D7 and all other Varga chart because that will create some more time consuming. So I'm limiting myself to D1 and D9 only. Now, when I calculated the Bija Sput, it was Pisces, 15 degree, 43, which is supposed to be Vargottam. So even sign, even Namasha. Santan Tithi is Krishna Paksha, Tritya, and Santan Karan Vishti, Bhadra. So again, Santan Karan is not good. Krishna Paksha is coming. It is Tritya, though, but Krishna Paksha itself supposed to be not much good. And Vishput is even. So it means that the person is not having the capability to give childbirth. The quality of sperm is not good. This is again a female chart in which she also couldn't get any child. Fifth Lord, Jupiter, is in the third house, along with the 12th Lord Moon. Now, it is aspected by the sixth Lord and seventh Lord Saturn, debilitated from the ninth house. So, no aspect of any other aspect is there on the fifth house. In D9, fifth Lord Saturn is again aspecting the fifth house, but fifth house is occupied by the 11th Lord Sun, enemy sign for the Sun. No other aspect is there on the fifth house. Now here again, the Kshetra Sput, it is Aquarius, 27 degree 35, that is odd sign and odd Namasha. Santan Tithi is Shukla Paksh Nomi, a Chidra Tithi. Though Shukla Paksh is good, but Tithi is Chidra. Santan Karan is Kola. Okay, good. But Kshetra Sput says that the lady is not having the capability to bear a child. She is having problem in ovulation, and that thing is there. Again, a male child, male chart. Fifth Lord, and eighth Lord in this chart are having the exchange. Mars in the Saturn sign, and Saturn in the Mars sign, aspecting each other. So eighth house is highly affected by the eighth house, eighth Lord. Now exchange is there. Aspect of 11th Lord from the 11th house is there. 11th house aspect is supposed to be good, क्योंकि 11th हाउस वृद्धि का होता है. अगर वो पंचम हाउस को देखता है तो संतान की वृद्धि को डिनोट करता है. तो इट मे शो सम प्रॉमिस द गर्ल, बट 8th house is debilitated. Saturn aspect is not good. 5th Lord debilitated in 8th house, showing some affliction.
Now, even in the D9, we see the Mercury 11th lord is in the fifth house, the Jupiter in the second house along with the debilitated Venus. No other aspect on the fifth house or fifth lord. Fifth lord is aspected by the Sun, which is a Lagna lord from the eighth house again. When I calculated the Beej put for it, it was Libra, 12 degree. So odd sign and even Namasha, that means the 50% chances are there. Santan Tithi was Krishna Paksh Ekadashi. Krishna Paksh is not good. And Santan Karan was Bala. Okay. So it shows that some medical treatment may give some chances of a childbirth in this case. But for pregnancy, for childbirth, we have to see the horoscope of both husband and the wife as a whole. Now again, this is another chart of a lady. Now here, the fifth house has the debilitated Venus in it, which is the Lagna lord and the sixth lord. No other aspect is there on the fifth house as such. But fifth lord is with the debilitated sun in the sixth house, along with the third lord moon, aspected by the Karaka Jupiter, and Jupiter is also the 11th lord from the 12th house. In the Damasha, fifth lord is aspecting the fifth house. This is good. And no other aspect on the fifth house is there, but fifth lord is aspected by the eighth lord Mars. Not a good combination. Now, Chetus, when I calculated Chetus, it was Pisces, even sign, and even Namasha. That is good. It is showing that childbirth promise is there. But Santan Tithi was Krishna Paksha Dwadashi, Chidra Tithi, and Santan Karan was Tithi. So she may have child after some medical treatment and some puja and all that. But still, in all these cases, the childbirth was not there because in some of the cases, the horoscope of the spouse was not available, like in this case. So it may be the problem, maybe because of the other chart also. So husband and wife both chart are important. Now, even if the pregnancy is there, lady may face some troublesome period during the pregnancy, which may give some medical issues and chances of abortion may be there. In this case, the classical have given, even this is also applicable in the Prashna chart also. Adhipati of different months are given in the classical as the first month. These are the lunar month basically. पहला महीना का स्वामी है शुक्र, सेकंड मंथ मंगल, तीसरे का बृहस्पति, चौथे का सूर्य, पांचवे का द मून, छठे का सैटर्न, सातवें का मरकरी, एट्थ का in Prashna it is the Prashna Lagan, but in the otherwise it is the Adhana Lagan basically. If childbirth is not there, you do not have the natal chart. You can check the natal chart of the lady also. 9th month ka lord is the moon and 10th month lord is the sun. In the horoscope of the Adhana Lagna or the native chart, specifically the lady, the planet which is afflicted in the natal chart, that particular month, suppose the sun is afflicted the 4th month and the last month, or the Saturn is afflicted in the 6th month, that month will give some problem concerning the pregnancy. So you have to be extra careful for in that particular month. So this is one of the ready reckoner that which particular months are has to be taken care of during childbirth and during pregnancy. Now, gun of parents in the child. Kshetranvayen khalu shukra gune gunitvam pitos tribhag yugmev shishur vibharti. A child has 2/3 gun dharma from his parental lineage. उसके दादा के, परदादा के, पिता के, माता के, नाना के, इन सब के जो गुण धर्म हैं 2/3 इसके बच्चे के अंदर आते हैं और 1/3 रिमेनिंग जो होते हैं वो उसके अपने होते हैं फ्रॉम अपने संस्कार जो पूर्व जन्म से आते हैं एज पर द वेद.
टोटल गुण कला जो बोली गई है 84 अंश की बोली गई है, जिसमें 56 अंश आर कंट्रीब्यूटेड बाय द मदर्स एंड फादर एंड रिमेनिंग 28 अंश आर ऑफ हिज ओन. नाउ आउट ऑफ द 56 अंश 21 अंश जो होते हैं इमीडिएट फादर मदर के होते हैं, 15 अंश ग्रैंड पेरेंट्स के होते हैं, दादा दादी नाना नानी भी ले सकते हैं, 10 अंश हमारे परदादा परदादी के, परनाना परनानी के, 6 अंश हमारी चौथी पीढ़ी के, 3 अंश पांचवी पीढ़ी के और 1 अंश हमारी छठी पीढ़ी का होता है. तो दिस इज एज पर द वेदा, जस्ट फॉर द academic interest I am just quoting it. Now संतान बाधा planet. Now after going through the horoscope you can see which house, which planet is expecting giving problem to the 5th lord or 5th house or the Karak Jupiter. That is the Santan Badha causing planet. Even the Badha Karak planet, that is for Char Lagna we say 11th lord, for Sthir Lagna we say the 9th lord, for Dvisubha we say the 7th lord. If that is in the 5th house, we say Santan Badha, maybe because of that. 5th lord is debilitated, combust in inimical sign, Shatru Rashi में हो, नीच का हो, अस्त का हो, 6-8-12 में बैठा हो या 6-8-12 के स्वामी यहाँ पे बैठे हों, that all gives problem in the childbirth. It may lead to childlessness and problem to the child. तो एस्ट्रोलॉजर को जो बाधा कारक प्लैनेट है उसके डीटी, उसका वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उससे रिलेटेड एनिमल की पूजा करनी चाहिए, या साइन ऑफ द प्लैनेट्स जिसमें वो बैठा है, जिसका वो सोर्स है. We should know first, calculate which is the Badha Karak planet, only then we can have the remedy of it. If it is the sun, then the curse, हम कहते हैं कि शाप जो है लॉर्ड शिव का आपने अपमान किया या गुरु का अपमान किया है, because sun is afflicted and not afflicting the 5th house, 5th lord. तो इसके लिए हमें सूर्य की पूजा करनी चाहिए, लॉर्ड विष्णु की पूजा करनी चाहिए, शिव की पूजा करनी चाहिए एनी फॉर्म. विष्णु सहस्रनाम का जाप करें, गायत्री का जाप करें, भागवत पुराण पढ़ें सुने, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान जी की पूजा. पे रेस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ द फादर एंड फादर लाइक पर्सनैलिटीज इन योर सर्कल. इनका सबका सम्मान करें, इनका अनादर ना करें, देन दिस बाधा विल बी रिजॉल्व्ड. इफ इट इज अ मून, संतान बाधा कॉजिंग प्लैनेट द मून, देन curse is because of the displeasure and wrath of the mother or Sumangli. We have in our past life hurt, give hurt to the feelings of the respectable woman. तो अगर चंद्रमा है, हमने पिछले जन्म में उनका माता समान स्त्रियों का अपमान किया है, उनकी सुमांगलिक का अपमान किया है, तो इस जन्म में उससे दूर करने के लिए हमें मदर या मदर लाइक वुमन की आदर सम्मान करना चाहिए. रुद्राभिषेक कराएं, शीश सूक्त का पाठ करें. मैरिड लेडीज जो हमारी दान के घर होते हैं, लाइक बहन, बुआएं, भतीजियां, भांजियां, इन सबको हम गिफ्ट दें. एंड जिन कपल्स में डिस्प्यूट हो रहा हो उसको हम कंसल्टेंस देके उनके वैवाहिक जीवन को टूटने से बचाएं. दिस गिव्स देन दैट बाधा इज रिजॉल्व्ड. इफ इट इज मार्स, देन द कर्स इज ड्यू टू द रॉन्ग डन टू द विलेज डीटी और लॉर्ड कार्टिके और योर ब्रदर लाइक पर्सन्स इन योर पास्ट लाइफ. इसके लिए इस जीवन में हम भैरव की या लॉर्ड हनुमान की पूजा करें, हनुमान जी की सुंदरकांड वगैरह. हमने भाई बहनों का ख्याल रखें, अपने कोबों जितने भी हैं, एंड अपने कुल देवता की समय समय पर पूजा करते रहें. दैट ये दिस बाधा इज रिजॉल्व्ड. अगर संतान बाधा कॉजिंग प्लैनेट मरकरी, देन कर्स इज ड्यू टू इनजस्टिस डन टू द यंगस्टर्स और किलिंग द एग्स और फिशेस और बर्ड्स और डिसरेस्पेक्ट टू द लॉर्ड विष्णु. हमने पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं अपने कोई अंडे फोड़े हैं किसी पक्षियों के या मछलियों के, तो इस जन्म में हमें अंडे इत्यादि नहीं खाना, इनका भक्षण नहीं करना चाहिए, चाहे वो एनिमल के हो, फिश के हो या किसी बर्ड के हो. रामकृष्ण की पूजा करें, अपने चिल्ड्रनों को एजुकेशन रिलेटेड केयर करें उनकी इन द सोसाइटी, उनको कोई मिसट्रीट ना करें. मरकरी यंग, इनका कारक जो है यंग चिल्ड्रन रहते हैं. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, अपने छोटे भाई बहनों का, स्पेशली कजन्स वगैरह का, सबका, उनके स्पाउस का ख्याल रखें. एंड अपने जो थर्ड जेंडर है, नपुंसक, मरकरी नपुंसक प्लैनेट, तो थर्ड जेंडर जितने भी हैं इनका सबका ख्याल रखें, इनको डोनेशन देते रहें समय समय पर, और अपने करेक्टर को बिल्कुल स्मूथ रखें, कोई अपना किसी में दाग ना लगने पाए, बिकॉज मरकरी इज ए वेरी इजी गोइंग एज फार एज द करेक्टर इज कंसर्न. टू नेवर मेक फ्रेंडशिप विद द लूज करेक्टर पर्सन्स, देन दिस बाधा इज रिजॉल्व्ड.
If the Santan Bada causing planet is Jupiter, that means the curse is due to the wrong done to the Brahmins or Purohit or Guru in the past life, या हमने पिछले जन्म में अपने कहीं फलदार वृक्षों को कटवाया है, तो इस जन्म में हम फलदार वृक्ष लगवाएं, अपने गुरु का सम्मान करें, बड़ों लोगों का सम्मान करें, पुरोहितों का सम्मान करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते रहें, और जितना ज़्यादा हम चैरिटी कर सकें, चाहे स्पेशली टू द टेम्पल्स और रिलीजियस प्लेस, दैट विल हेल्प टू रिमूव दिस बाधा. If Santan Bada causing planet is the Venus, then it is due to the injustice done to the virtuous woman. हमने पिछले जन्म में पतिव्रत या स्त्रियों का अपमान किया है, उनको कुछ परेशानी की है उनके पतिव्रत धर्म निभाने में. हमने फ्लावरिंग ट्रीज को कटवाया है, या हमने गाय के साथ कुछ अत्याचार किया है, तो उसका हमें फल इस जन्म में भोगना पड़ता है. Now we should, in this life, we should plant more and more flowering trees. We should not cut them. We should give to the married ladies. We should take care of the cows and motherly women, sisters. Give to them costly item, जो कि वीनस का कारक है, तो costly jewelries वगैरह उनको डोनेशन में दें, और उन्हें खीर इत्यादि पब्लिक में बंटवाएं. तो खीर बेसिकली मीठी खीर जो होती है वीनस के डोनेशन के लिए अच्छी मानी जाती है. If the Santan Bada causing planet is Saturn, then the curse is due to the cutting of people tree. हमने पिछले जन्म पीपल का वृक्ष कटवाया है, या हमें यम का अपमान किया है, या हमें किसी बुरी आत्माओं को अपमान किया है पिछले जन्म में, तो इस जन्म में हमें शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए. हमें फिजिकल और मेंटल प्योरिटी रखनी चाहिए. स्पेसिफिकली षड रिपु जो हमारे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इसको अपने से जितना दूर रखेंगे हमारी मेंटल प्योरिटी रहती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है. डोनेट ग्रेन्स ऑन अमावस्या. Take bath in the rivers and seas. That will help. Now, if the Santan Bada causing planet is Rahu, Ketu or Mandi, Rahu is because of the curse from the serpent. This सर्प दोष है, हमारे पास सर्प का श्राप है. If planet is Ketu, then Brahmin का श्राप है. और मांदी है तो हमें किसी आत्मा का हमारे पास श्राप लगा हुआ है, तो पिछले जन्म का. तो हमें ये प्लैनेट जिस जिस राशियों में बैठे हैं उनके स्वामी का ही हमें रेमेडीज लेने हैं. नाउ दीज आर इन जनरल. संतान के लिए हमें समुद्र स्नान, गंगा सागर, रामेश्वरम वगैरह करना चाहिए. हमें धार्मिक ग्रंथों का हमेशा पाठ करते रहें, करवाते रहें. भगवान शिव, भगवान विष्णु की हमेशा पूजा करते रहें, करवाते रहें. और इन द ऑनर ऑफ हमारे जो श्राद्ध वगैरह प्रॉपर समय समय पे करते रहे, उनको अपने पितरों के नाम की कुछ हमें देते हैं, क्योंकि पितृ शाप की वजह से संतान में कई बार प्रॉब्लम आती है. और हमारे जो सर्प देवता वगैरह है, इनका हम जगह अपना इंस्टॉलेशन वगैरह कराएं. इनकी रेमेडी जो हमें बताई जाती है वो सारी करेंगे, तो हमारे पास विद पैसेज ऑफ टाइम वी विल हैव द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड इन द फॉर्म ऑफ ए चाइल्ड. नाउ दिस वाज ए ब्रीफ अबाउट द classical part, about the childbirth and pregnancy. Now, what the relationship will be between the father and the son, or mother or the son? This is also one of the basic question asked कि कुंडलियां में आती है जी, ये बेटा जो है हमारे लिए कैसा रहेगा माता पिता के लिए. दिस इज जनरली आस्क्ड. तो इस बारे में व्रत प्राशर और सात प्रश्न मार्ग में कुछ कम्युनिकेशंस दिए हुए हैं. आई विल जस्ट लाइक टू कोट हियर. पितृ जन्माष्टमे जातस्तदीशे लग्न गे अपिवा करोति पितृ कार्याणि स एवात न संशय. व्रतप्राशर होर शास्त्र चैप्टर 71 श्लोक 15. ये कहता है कि पराशर ऋषि कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की लग्न राशि पिता के लग्न की अष्टम राशि हो, या उसका जो 8th लॉर्ड है वो किसी जातक के पिता के जो 8th लॉर्ड है वो जातक के लग्न में आ जाता है, तो वो अपने पिता की सभी जिम्मेवारी उनकी मृत्यु के बाद लेता है. तो he will take all the responsibility of the family after the death of the father. Now श्लोक 16 says, सुख नाद दशायांतु सुख प्राप्तेश्च संभव सुखेषु लग्न लाभस्ते चिन्नस्थानाद विशेषता पितृ गेहे समायुक्ते जाते पितृ वशानुगः. ये कहता है कि अगर पिता हमारे 4th लॉर्ड की दिशा में, अगर 4th लॉर्ड अगर हमारा 4th हाउस एफ्लिक्टेड नहीं है तो पिता को सुख मिलता है.
एंड अगर फोर्थ लॉर्ड लग्न में है या 11वें में है या चंद्रमा से 10वें 11वें है तो पुत्र जो है पिता का आज्ञाकारी रहता है आजीवन। सिमिलरली श्लोक 17 से पितृ जन्म तृतीय जाते पितृ धनाश्रिता पितृ कर्म गहे जाते पितृ तुल्य गुणान्विता। अगर किसी बच्चे का जन्म पिता के लग्न से या चंद्रमा से तृतीय राशि में होता है तो वो अपने पिता की सभी वेल्थ का जो उसे इनहेरिटेंस में मिलती है उसको प्रॉपर यूज करता है। लाइक इन द केस ऑफ शेख अब्दुल्ला, इट वाज अ लिब्रा ascendant and Farooq Abdullah was born in the third sign from the lagna of the father, that is the Sagittarius Farooq Abdullah. Now, the base which was prepared by the Sheikh Abdullah in Kashmir, that was taken up by the Farooq Abdullah, and later on he also became the chief minister of the state. Until now, he is doing the politics in the state. अगर जन्म लग्न या चंद्रमा से 10वीं राशि का होता है तो नेटिव अपने पिता की सभी अच्छी क्वालिटी लेता है। वी कैन से कि ही इज जस्ट लाइक द फादर एज फार एज हिज कर्मा इज कंसर्न्ड। तो पिता की 10वीं राशि चंद्रमा या लग्न से उसमें अगर बच्चे का जन्म होता है दैट इज सपोज टू बी जस्ट द सन विल बी लाइक ए फादर। 18 श्लोक से तदीश लग्न संस्थे अपि पितृश्रेष्ठ भवन नरा एवं पूर्वोक्त सामान्य फलम चात्रपि चिंतित। अगर नेटिव का 10th लॉर्ड लग्न में है तो वो अपने फादर से ज्यादा तरक्की करेगा, ज्यादा नेम एंड फेम वाला होगा। दिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉम्बिनेशन देयर यू विल फाइंड इन नंबर ऑफ पर्सनालिटीज व्हिच आर फेमस। इफ द 10th लॉर्ड इज इन द लग्न then he is self-made, he is distinguished from his father, and he makes his name and fame better than the father. Similarly, Prashna Mark, chapter 16, slok 61, says that Jatak will perform the last ritual of his father if sun and 9th lord in his own sign. Surya और 9th lord अपनी राशि के अपने नमाज के हों या चर राशि को चर नमाज के हों। सन एंड 9th लॉर्ड 12वें भाव में हो या 12वें भाव में देखते हो, 12वें भाव को देखते हो तो जातक अपने पिता का संस्कार करता है। परंतु अगर यहां पर ये कॉम्बिनेशन नहीं है या 9th हाउस में मैलिफिस बैठे हैं तो ये लास्ट रिचुअल्स वो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ सम डिसीज और सम अदर थिंग्स, सम अदर प्रॉब्लम में भी देयर। अगर 9th हाउस में शुभ या अशुभ दोनों ही प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, in that case, if benefics are behind the malefics in longitude, then we will say that he will perform the rituals of the father. Similarly, for rituals of the mothers, we should take moon and the 4th house instead of the sun, 9th house and 9th lord. We should take the moon and the 4th house. Chapter 16, Shlok 64 says, son will perform the last ritual of the father if son is born the Lagna sign, that is 8th sign of the father. It has been said in the Prasha Rora Shastra also. फादर के मून साइन से 8वीं राशि में लड़के का जन्म होता है तो लास्ट रिचुअल करता है, या लग्न साइन। अमिताभ बच्चन का केस में एक्वेरियस लग्न है और उसके पिता हरिवंश राय बच्चन का मून साइन वाज द कैंसर, सो the Amitabh Bachchan Lagna was Aquarius, which is the 8th sign. We all know that the last rite of Harivansh Rai Bachchan was performed by his son. Now, 8th lord of the father is in the Lagna of the son. This also, in that case also, he performed the last rituals. If son is born in either of the 3 nakshatras, अगर वो बच्चे का जन्म जो है पिता के 8th lord के नक्षत्रों में होता है, तो वी हैव टू सी द 8th लॉर्ड देन इट्स नक्षत्र। और बच्चे का जो संतान का जन्म है वो इन तीनों में से कोई सा भी नक्षत्र उसका होता है तो वो भी अपने पुत्र पुत्रादि के साथ अपने पिता की सभी दीक्षा या कर्म रिचुअल्स परफॉर्म करता है। नाउ लग्न ऑफ द सन इज द 10th साइन फ्रॉम द मून ऑफ द फादर। सन विल बी लाइक द फादर। इट हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द Vratra Rora Shastra also says the same thing. Now chapter 16, Shlok 66. It says,
सन विल मेक हिज फादर हैप्पी इन द फॉर्म ऑफ हिज गुड सर्विंग इन द लाइफ टाइम, अपने पिता की सेवा करेगा पुत्र, और उसके सभी मरने के, उनकी डेथ के बाद भी सभी कार्य पूरा करेगा, उनकी दीक्षा, रिचुअल्स, लास्ट रिचुअल्स वगैरह। अगर नाइन्थ लॉर्ड लग्न से उसका 11th में चला जाता है, या चंद्रमा से नाइन्थ लॉर्ड उसका चंद्रमा से 11th में चला जाता है, तो नाइन्थ लॉर्ड इन 11th इंडिकेट्स दैट he will perform all the life rites of the father. 10th lord from the lagna of the father is in the lagna of the sun, तो वो अपने पिता से के समान या उनसे हायर हर फील्ड में जाता है। This is also one of the combination that pressure indicates. Now प्रश्न मार्क चैप्टर 16 श्लोक 65 says, moon sign of the sun is in the 9th or 11th sign of his father, he will follow and obey his father. तो चंद्रमा अगर बच्चे की राशि आपके पिता से 9th या 11th राशि है उसकी कुंडली में पिता की, तो वो हमेशा अपने पिता का आज्ञाकारी रहेगा, उनको फॉलो करेगा हमेशा। मून साइज ऑफ फादर इन 11th, फादर का मून साइज 11th में चला जाए या उसके टाइम्स में चला जाए, moon sign of the sign of the sun or from the lagnesh dispositor sign of the sun, then son will get the earned wealth of the father. तो 11th से कनेक्शन होना ये दिखाता है कि उसको पिता की सभी संपत्ति मिलेगी, earned wealth जो पिता की है। एंड फाइनली सन जो है अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लेता है अगर लग्न लॉर्ड 9th में हो, लग्न लॉर्ड 9th लॉर्ड के साथ हो, या लग्न लॉर्ड सन के साथ हो। ये सब इंडिकेट करते हैं कि उसके बाद पिता का सपोर्ट उसका बना रहेगा और वो अपने पिता से संबंधित कार्य को कर सकता है if he wish to, अदरवाइज पिता की उसके कार्य में सभी तरफ से सपोर्ट बनी रहेगी। प्रश्न मार्क चैप्टर 16 श्लोक 67, इट सेज, सूर्य का अगर संतान का चंद्र नक्षत्र पिता का 12th लॉर्ड के नक्षत्र है, आई एम रिपीटिंग, अगर पिता का 12th लॉर्ड का नक्षत्र में बच्चे के जन्म होता है, इन दैट केस पुत्र से पिता को अनहैप्पीनेस रहेगी, बिकॉज ही विल गो फार अवे फ्रॉम द फादर, और अलग अलग दूर जगह पे चला जाएगा और पिता उसके लिए हमेशा पूरी जिंदगी उसको बुलाने के लिए तड़पता रहेगा। सिमिलरली अगर उसका पिता के 6th लॉर्ड में अगर बच्चे का जन्म होता है, दिस वेरी रेडी रेकनर, तो उस केस में पिता जो है पुत्र से, दोनों में आपस में शत्रुता बनी रहती है। और अगर 12th लॉर्ड पुत्र का 12th लॉर्ड अगर फादर के मून डिस्पोजिटर के साथ आ जाए, तो उस केस में भी पुत्र को पिता के अनपेड लोन्स चुकाने पड़ जाते हैं। तो ये एक बड़ा, पुत्र का जन्म जो है पिता के कौन से नक्षत्र में हुआ है और पिता के लिए वो नक्षत्र का स्वामी कहाँ का लॉर्ड है, ये हमें देखना है। उस समय ये इजीली पता लग सकता है कि जनरली ये हमें प्रॉब्लम कहाँ से रहेगी, पुत्र हमारा साथ रहेगा नहीं रहेगा। इफ इट इज 9th या 5th या लग्न या केंद्र से कौन, that is good, but if it is 6th, 8th or 12th lord, that is bad. And then son will not take care of the father, he will have enmity or will go far away places or will have to pay the loans for the father. Now chapter 16 श्लोक 67 also explains whether the son will be with the father or not at the time of his death. 9th house में, now this, I think this should be more applicable in the case of Prashna, but you can apply in the natal chart also. 9th house में चर राशि हो and 9th lord भी चर राशि में चला गया हो, या 9th lord 8वें में या 12वें में चला जाए और सूर्य भी 8वें में 12वें में चला जाए, in that case पुत्र जो है पिता की मृत्यु के समय उसके पास नहीं रहता है। सिमिलरली पुत्र को ट्रांजिट में अगर न्यूज मिलती है पिता के डेथ की, मृत्यु की, अगर
9th हाउस में द्विस्वभाव राशि है और 9th लॉर्ड भी द्विस्वभाव राशि में चला गया है। ऑन द कंट्री, पुत्र जो है पिता के पास होता है उसकी मृत्यु के समय, अगर पुत्र के होरोस्कोप में 9वें घर में 9th हाउस 9th लॉर्ड स्थिर राशि में हो, 9th हाउस जो है एस्पेक्टेड by the 9th lord, it is misprinted here 9th house, it should be 9th lord, and 9th lord is sun. Possibly this is possible only in the case of Lagna Sagittarius. Now if all three 2 or 3 combinations are there, then the sun will be at the time of death will be with the father. I think